Hello guys, my name is Naresh from Pune and this is my new channel Tech Guy Naresh। और आज हम देखेंगे मेरे ड्रीम पीसी बिल्ड का एक वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम अनबॉक्सिंग करेंगे मदरबोर्ड की, जो है Asus टफ गेम सीरीज़ का X470 प्लस विथ Aura Sync RGB लाइटिंग। उसमें चार रैम स्लॉट्स हैं DDR4 के विथ 3200 मेगाहर्ट्ज़ सपोर्ट के साथ, और उसमें है नेटिव USB 3.1 जनरेशन 2 के। अब हम अनबॉक्सिंग करेंगे CPU की, जो है Ryzen 3700X विथ 8 कोर्स एंड 16 थ्रेड्स एंड क्लॉक स्पीड है 3.6 गीगाहर्ट्ज़। हम उसको ओवरक्लॉक कर सकते हैं 4.4 गीगाहर्ट्ज़ तक। ये है कुछ मेन की पॉइंट CPU के बारे में। अगर आपका बजट 1.5 lakhs है तो गो फॉर इट। इस प्राइस रेंज में ये CPU बेस्ट है गेमिंग एंड स्ट्रीमिंग के लिए। अब आते हैं रैम की ओर, जो है कॉर्सैर से DDR4 8GB रैम। मैंने अभी 8GB के 2 लिए हैं और आगे 2 और ऐड करने वाला हूँ 8GB के ही। ये है GPU, जो है Zotac से RTX 2060 6GB एम्प एडिशन डुअल फैन के साथ आता है। इसमें हम 4K गेमिंग भी कर सकते हैं। iStorm 2.0 कूलिंग भी है इसमें। फैक्ट्री ओवरक्लॉक बूस्ट, क्लॉक इज़ 1.8 गीगाहर्ट्ज़। 3 डिस्प्ले पोर्ट आते हैं, एक HDMI पोर्ट आता है।
मदरबोर्ड पे अटैच करेंगे। ध्यान से करना है। सबसे पहले सीपीयू को अटैच कर लें। सीपीयू अटैच करते वक्त स्टैटिक एनर्जी का ध्यान रखें, क्योंकि ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद हम रैम अटैच करेंगे। यह है कैबिनेट कूलर मास्टर की ओर से। इसका मॉडल नंबर है H500। बहुत बढ़िया है, थोड़ा हैवी है लेकिन बेस्ट है। बिल्ड करते वक्त ध्यान से करना। इस कैबिनेट के बारे में बात करें तो इस कैबिनेट में 3 फ़ैन है। एक्स्ट्रा फ़ैन ऐड करने के लिए स्लॉट्स भी है। RGB लाइटिंग के लिए एक एक्स्ट्रा पोर्ट भी दिया है। अगर आपको एक्स्ट्रा लाइटिंग ऐड करनी है कैबिनेट में तो आप कर सकते हैं। अब हम कैबिनेट में पहले मदरबोर्ड फिक्स करेंगे। इसके लिए कैबिनेट की मैनुअल की हेल्प लेंगे हम। कौन सा स्क्रू कौन से पोर्ट में जाना चाहिए डायग्रामेटिकली बहुत अच्छे से बताया है। खुद के मन से कुछ एक्स्ट्रा ट्राई नहीं करना है। एक बार मदरबोर्ड फिक्स हो गया तो हम ग्राफिक्स कार्ड और बाकी की चीज़ें अटैच कर लेंगे। मैंने इस पीसी बिल्ड के लिए कूलर मास्टर का 750 वाट्स का SMPS लिया है। आप चाहे तो 650 वाट्स का भी यूज़ कर सकते हैं।
अब हम हार्ड डिस्क एंड एसएसडी अटैच करेंगे। हार्ड डिस्क मेरी सीगेट की 2 GB की है और एसएसडी 250 GB की जो सैमसंग से है। अब हम अनबॉक्सिंग करेंगे मॉनिटर की, जो है सैमसंग की ओर से 23.5 इंच का QLED कर्व मॉनिटर है। इसका रिफ्रेश रेट है 144 हर्ट्ज़ और इसका रिस्पॉन्स टाइम है 2 to 8 मिली सेकेंड का, डिपेंडिंग ऑन सेटिंग। मैंने इस पीसी बिल्ड के लिए लॉजिटेक का कीबोर्ड जो है G213, माउस G402 एंड हेडफोन G433 यूज़ किया है। अब हम इनकी अनबॉक्सिंग करेंगे।